women's card, backbiting, gossip, and Kalesh Pe Kalesh. Big Boss 19 is one of my favorite seasons after Siddharth Shukla's season, trust me. And I started watching the moment I saw Amal Malik in its premiere and later for Gaurav Khanna. Yes, these two are my favorite contestants. So far, all the contestants are amazing, and it has been an amazing experience watching Big Boss 19. So far, what I saw in Big Boss was that Gaurav Khanna, who seems to be a very intelligent and charming, he has been my favorite since Anupama. I watched it for him literally. Gaurav Khanna is intelligent, like everyone is telling him that he's playing on the back foot, and yes, he needs to back up and play on the front foot. But one thing I like about him that he's very fair, and I never saw him backbiting and gossiping about anyone for no reason. He stood for people of his group, be it Abhishek, Ashnur, or others. Even for Kunika, he didn't backstab her. It was that he told something to Tanya before he could go and tell to Kunika. And Tanya ne to tili maar hi di thi. Tanya is another amazing contestant Big Boss has ever had. Oh my god, डेट्स ऑफ बॉडीगार्ड्स, काश मेरे भी होते यार. डेट्स ऑफ बॉडीगार्ड्स लेकर ये बंदी बिग बॉस के हाउस में आई है. उसके नाजुक हाथों को ग्लव्स डाल के वो झाड़ू मारती है, झाड़ू पोछा बर्तन. उसको खाना बनाना नहीं आता पर वो कोशिश करती है. और कुनिका मैम ने उसको माँ बहन कर दी है लिटरली. उसकी मम्मी ने उसको कुछ नहीं सिखाया, यहाँ तक बोल दिया. एंड दैट वाज रियली मीन ऑफ यू कुनिका एज अ सीनियर आर्टिस्ट. They all respect you as a senior, someone who's like a motherly figure and elder than you. But one thing I noticed that you don't accept your mistake. I agree that past में आपने जैसे बोला है आपके साथ चीज़ें हुई है, betrayal हुआ है, because of which you have this रवैया towards people. But that doesn't mean कि आप बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स पे सारा गुस्सा निकालो. जस्ट यू गेट ऑफेंडेड, agreed, you take revenge and you become very toxic while you want to take revenge and hurt people, and that's really hurtful. When you talk about sanskar and what not, you are nobody to decide anybody's sanskar, trust me. And you are breaking your dear ones. Gaurav was one of the persons who treated you like a mom, and just for the vote thing you treated him like he's a snake, slime snake. Honestly speaking, Gaurav Khanna has said nothing to be called a slime snake in Big Boss 19 so far. I have watched each and every season. You are pushing away people who genuinely cared for you. Be it Tanya and Neelam. And poor Neelam is stuck between Tanya and Kunika. I was happy when I saw yesterday's Weekend Ka Warrant where she was taking a stand for herself. And she should start speaking up. As Tanya will use her, and Kunika is already playing a game. She is like sometimes with Tanya, sometimes with Neelam. She has Basir as a backup, Farhana, whatnot. She will sail smoothly. And I saw Big Boss and Salman Khan are a bit partial towards Kunika. Because though Weekend, when Kunika had the least votes, there was no elimination. So I feel there's a bit of partiality towards Kunika. Coming towards one of my favorite contestants, Amal. Amal, honestly speaking, I was happy seeing you when you entered the BB house and saw your entry during the grand premiere of Big Boss 19. But the way you started was really not pleasing. I'll tell you as an honest fan. You were in a group of gossip mongers, I guess, except Jishan. Be it Basir or Nehal are not someone to trust on, account on, even as friends. They will flip like you and Jishan have already realized that they both are flippers and they will look out for themselves. And I'm happy now finally you have realized you're no more sleeping like 4 hours, like दिन में भी नहीं सो रहे. आपको पता चल गया कि आपके कौन वेल विशर्स है और कौन दिखावा कर रहा है. You have started getting involved and taking stand for things. The way you stood for Tanya when there was a sanskari comment by Kunika was really appreciable. You didn't care for groupism, but you stood as a person. Again, when it came to Nehal's, that drama she did during the task, you didn't have to be so upset or take things on heart because of Nehal. Nehal is doing a total drama and playing women's card. I'm sorry, she is not a face of feminism. And I'm not a feminist. I believe in equal rights, but even I know that feminism follow करने वाली औरतें ड्रामा नहीं करती. She is playing smart and she knows कि लड़की का कार्ड. She did it same for Abhishek in the past. For no reason, she had no right to interfere. फराना को उसने भड़काया on the contrary. And
पुअर अभिषेक वॉज द विक्टिम एज यूजल। कुछ भी होता है अभिषेक को लोग आके सुनाते हैं, एंड ये बंदा बहुत ही अच्छा है। ही इज़ एन ऑनेस्ट हम्बल गाय, लाइक वॉट ही हैज़ कम अक्रॉस इन बिग बॉस, बट अनफॉर्चुनेटली ही डजंट लिसन टू हिज फ्रेंड, जो सुनना चाहिए। बिग बॉस हाउस में भी आकर आपको अगर अच्छे दोस्त मिले तो यू आर रियली लकी, बिकॉज पीपल लुक आउट फॉर देमसेल्व्स एट द एंड ऑफ डे इन बिग बॉस, बट यू डोंट लिसन टू योर फ्रेंड्स, तो क्या ही करे। और कभी कभी आप इतना अच्छा करने जाते हो कि अपने ही फ्रेंड्स को नॉमिनेट करवा जाते हो। पुअर अवेज एंड नगमा हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग योर फ्रेंड, दे गॉट डायरेक्टली नॉमिनेटेड। सजेशन फॉर अभिषेक, I just want to tell Abhishek, you are also one of my favorite contestants. Just trust people who are your friends, and I don't think Gaurav has anything against you as a person. I saw a snippet where you and Ashnur were bitching about Gaurav that he is playing chess, he is using people. Honestly speaking, he is not using people, first. Secondly, yes, he has been playing like an umpire and diplomatic person, like Farah Khan said in the past, in the last episode. But he is not someone who is betraying his own group. He is playing a fair game so far, and if he is giving suggestions to people, be it to Tanya, सपोर्टिंग तानिया, ही ऑल्सो टोल्ड अमाल, जब फरहाना ने बोला कि मैं कोई काम नहीं करूँगी आफ्टर अमाल बिकेम कैप्टन, बिकॉज शी वॉज ऑफेंडेड दैट फ्रॉम हर ग्रुप नोबडी voted for her, and nobody also told that they are unanimously voting for अमाल. उस टाइम पे गौरव चाहता तो अमाल को प्रोवोक कर सकता था कि हाँ इसका खाना बंद कर दो, बट ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बोला बिग बॉस खाना नहीं रोकते तो ऐसा मत कर. सो दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन, एंड आई बी हैप्पी अगर गौरव भी सामने से खेलना शुरू करे. एंड आई एग्री दैट ही डजंट वांट दूसरे के मामले में नहीं घुसना. दो लोग समझदार है, अगर बैल और भैंसा लड़ रहे तो उसको बीच में नहीं आना. उनको भी पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है. बट येस, you can always be open and take a stand for people. Otherwise people are thinking that you are just a silent watcher and you're not taking stand for your friends. ये उनको लग रहा है कि तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे ग्रुप के लोगों को लग रहा है कि आप उनको यूज़ कर रहे हो, जो सच नहीं है. हम एज ऑडियंस देख रहे हैं, हमको पता है यू आर नॉट यूजिंग योर फ्रेंड्स. आई रिमेंबर ड्यूरिंग द लास्ट कैप्टनसी टास्क व्हेन अभिषेक एंड बसीर वर प्लेइंग एंड बसीर वॉज लिटरली पुलिंग थिंग्स आउट, यू टुक अ स्टैंड फॉर अभिषेक. सो इन फ्रंट ऑफ एवरी वन यू टोल्ड अभिषेक दैट अगर वो निकालते जा रहा है तो तुम वो क्लॉथ बांधते क्यों जा रहे हो, तुम भी उनके कंटेस्टेंट्स का निकालो. सो दैट वॉज अ फ्रेंडली क्वालिटी. And so far Big Boss is really good and we look forward to more entertainment. But एक चीज़ और नोटिस की कि मुद्दे बहुत ही छोटे छोटे एंड ट्रिवियल मुद्दे होते ना, छोटे नॉट नेसेसरी मुद्दों पर इशू बनता है. इफ़ आई कंपेयर पहले की सीजन्स में लोग वेर वेरी स्पोर्टिव एंड कॉम्पिटिटिव व्हेन इट केम फॉर टास्क. यहाँ पे सब ठंडे पड़ जाते हैं और बहुत कम है जो एक्साइटमेंट दिखाते हैं. एंड ग्रुपिज्म यस है, वो तो हर बिग बॉस सीजन में होगी. अपने ग्रुप के लोगों को साथ में लेकर चलना है. जो लोग बोलते हैं कि ग्रुप बना के चल रहे, झुंड पे बना के चल रहे, वो खुद ग्रुप में चल रहे हैं. आई सॉ फ्रॉम डे वन दैट बसीर हैज़ बीन टारगेटिंग गौरव and Abhishek and wanting to kick them out of the show because they are his competitor, and he has used Amal so far. Now Amal has realized that they are not his enemy. बसीर का डे वन पे एक रिएक्शन था जहाँ पे उसने बोला था सबसे ज़्यादा वोट्स मृदुल को मिले, तो लोग दिमाग से खेलते तो मृदुल को नॉमिनेट करके वोट आउट करते हैं, नॉट फरहाना. दैट इज बसीर स्ट्रैटेजी दैट ही वांट्स टू किक आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आउट ऑफ बिग बॉस सो दैट इट विल बी ईजी फॉर हिम टू विन बिग बॉस. बट दैट्स नॉट हाउ विनर्स प्ले. विनर्स अपने बराबर या अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ कॉम्पीट करते हैं. दैट्स वॉट वी एज ऑडियंस वॉन्ट टू सी. एंड इफ यू आस्क मी माई टॉप 5 contestant, it will be Gaurav Khanna. He is a delight to watch. Amazing, intelligent man. Just buck up and play on front foot. Otherwise, you are one of the best contestants. And after Siddharth Shukla, I love watching you. Amal Malik has been my favorite composer singer, and now he has realized and he's playing a right game, and I'm happy that he's finally come out as the person he is and not being a part of that gossip mongers, which he is not. And I look forward to his and Gaurav's camaraderie because I believe Gaurav is a good person and he will support Amal. He always took a stand for Amal. Basiir, Nehal are not his friends.
Jishan, he might be loud, but he is still an honest person. And initially, I was annoyed by Jishan's loud noise and making noise against Gaurav and saying whatnot things, oh, aaj nikalna hai, whatnot. But now he has calmed down a bit, and I see a person in the form of Jishan, जहाँ पे उसको stand लेना है सही के लिए वो लेते हैं, be it someone from the other group or his group. And that's a good quality of a contestant, and I want to see him in more episodes. Farhana has finally calmed down because the way she came back and so much noise she used to make was really not necessary for footage. मुझे लगता है फरहाना को दिमाग है, शी इज़ अ नाइस पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, बट वो अपनी मुंह से सब कुछ गंदा कर देती है. This is one of the reason Gaurav is supporting her. This is something I believe. If she supports right people rather than making noise for no reason, going behind Basir and trusting Nehal, she has a long way to go in the show because Nehal is a flipper. जो अपने ग्रुप की नहीं वो फरहाना की क्या ही होएगी. And Basir के लिए तो I guess I would say that you might have won Splitsville and whatnot shows, but trust me, बिग बॉस में तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा. यहाँ पे सबसे वीक इंसान ने भी अपने दिमाग के बलबूते पर बिग बॉस का सीजन जीता है. So it's a mix of brain and task, yes. And entertainment, honestly speaking, as a viewer, we always don't want to see people bitching about each other, gossiping and fighting and throwing things at each other. We want some good entertainment. There have been episodes where people were creating some scripts, like Gaurav kuch scenario bata raha tha, Ashnur was a part of it, Praneeth was a part of it. They were like Punjabi माँ, मराठी बंदा कोई भोजपुरी लड़की शादी करके लेकर आया है और पंजाबी पिता अभिषेक बना. एंड देयर वाज अ सीन वेयर फैशन का रैंप वॉक कर रहे. पीपल आर ट्राइंग टू डू थिंग्स टू एंटरटेन अस. यू कैन ऑल्सो एंटरटेन अस विद गुड थिंग्स. ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में गाली गलौज करने से लोगों को व्यूज़ मिलते हैं. आई डोंट थिंक. समटाइम्स आई फील लाइक म्यूटिंग द बटन व्हेन पीपल आर शाउटिंग फॉर नो रीजन, स्पेशली फरहाना एंड नेहल को तो दूसरों के मुद्दों में वुमेंस कार्ड घुसाने की आदत है. एंड आई गेस शी शुड रियलाइज दैट इट वोंट वर्क ऑन नेशनल टेलीविजन. एज अ वुमन आई डोंट सपोर्ट आइदर हर स्टैंड व्हेन शी मेड अ नॉइस फॉर अभिषेक. अभिषेक ने गेम के स्पिरिट में उसको उठाया था फरहाना को, एंड ही हैड नो बैड इंटेंशंस. सेकेंडली इवन अमाल अपना टास्क करा था. जब नेहल ने उसको कोना मारा तो दैट इज़ अलाउड. एंड अगर टास्क के वक्त अगर उसका कोना लगा नेहल को तो इट इज़ नथिंग टू मेक इश्यू अबाउट और क्राई फॉर नेक्स्ट 4 hours. टू बी ऑनेस्ट, when you're presenting something on national TV, you're actually putting someone in a place, in a spot where people will start questioning their character. So don't play that card, Nehal. As women, we are not liking it. So that's all my so far experience of watching Big Boss. आई होप यू गाइज आर ऑल्सो वॉचिंग. एंड अगर आप नहीं वॉच करें तो ज़रूर वॉच करिए क्योंकि इट्स अ गुड पास टाइम टू वॉच बिग बॉस. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट कंटेस्टेंट्स आउट देयर. इफ यू आस्क मी अबाउट माई टॉप कंटेस्टेंट्स, आई वांट टू सी गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तानिया मित्तल, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, जीशान सिद्दीकी एंड नीलम. I guess top 7 हो गए, but these are really strong contenders and Neelam is also a strong contestant. And she has been sweet throughout the season. The way she cooks and never makes claims about cooking is really appreciated. And उनकी भोजपुरी भी बहुत प्यारी है, पसंद आती है, बहुत ही अच्छी इंसान नज़र आ रही है. बहुत important है कि she is taking a stand for herself. And I hope Big Boss unfolds in a good way in further seasons. May the best stay and the people who are not putting the effort are voted out. But at the end of the day, it's overall audience decision. Ashnur के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी that you come across like a very balanced and sweet person. You have been dignified throughout the Baby 19 episodes. One thing I didn't like is that you were telling Gaurav that he didn't take a stand while Basir and Abhishek were fighting. He didn't intervene. But when Awais and Basir were fighting, you were the one who stopped Abhishek from intervening. This is double standards, honestly speaking. This is double standards because एक जगह पे आप गौरव को बोल रहे हो कि आप क्यों बीच में नहीं पड़े अभिषेक और बसीर की फाइट में, एंड दूसरी तरफ आप अभिषेक को रोक रहे हो जब वो अवीज़ और बसीर की फाइट के बीच में एज अ फ्रेंड जा रहे थे. सो दिस इज़ नॉट समथिंग राइट.
And one more thing, Gaurav has been supporting you from day one, but you, on the contrary, bitching about him is something I didn't like it. I hope you don't break Abhishek and Gaurav's friendship. Honestly speaking, Gaurav is someone who can support Abhishek. Abhishek is very healthy, has a sweet personality, humble and everything, but he lacks a lot when it comes to using his strategies in a right way, and he would need help of his friends like Gaurav, Aviz and all. So I hope they all stay together. Aviz, यार क्या हो गया है बिग बॉस में आके? I follow you on YouTube. I'm a fan of your dance. You and Nagma both. But यहाँ पे तुम दोनों ठंडे पड़ गए हो. Recently थोड़ा effort दिखा तुम दोनों का. You guys have come out and are doing good. रिगार्डिंग मृदुल, यहाँ पे आप शो करने आए हो, प्यार करने नहीं. यू हैव कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. आप यूपी के एक छोटे शहर से आए हो अपना नाम बनाने बिग बॉस थ्रू सेट अपनी पहचान बनाने आए हो. नतालिया इज नॉट सीरियस अबाउट यू. डोंट गो टू दैट लाइन. इट डजंट वर्क फॉर ऑल. So that's all about my review of watching and my opinion on watching Big Boss. I hope you guys liked it. Thank you so much for watching my Big Boss review so far, and I'll come back with a new video on my experience on further episodes of Big Boss. Till then, like, comment, follow me and do subscribe.